You need to remain very professional in your approach. You will get to know what is important from examination point of view and what is how political science syllabus it can be integrated with. Hello students. So today we will discuss about political science syllabus. It will be a very interesting topic for you. You will get an idea about political science syllabus, why to take political science optional, what are the benefits of taking political science optional, and I will also give you a glimpse into various parts of political science, various components of political science. And then we will discuss about integration of political science with current affairs and what needs to be done. So on all these aspects we will discuss today. So I hope this is going to be a very interesting session for you, and this session will add a lot of value to your preparation if you are new to the arena of civil services. So this particular lecture will give you a lot of idea about the subject itself, and if you are confused about the optional, so it will also clear a lot of your doubts. So before embarking about decoding syllabus, so let me first make this fact very clear to you that every optional is a great optional. It depends upon the student which optional you are taking. तुम कोई भी ऑप्शनल ले लो, हर ऑप्शनल एक ग्रेट ऑप्शनल है. एवरी ऑप्शनल हैज गॉट सिमिलर पोटेंशियल एंड पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल इज ऑब्वियसली नो डिफरेंट. तो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस सिलेबस, and then we will also discuss about the way political science syllabus is to be integrated with current affairs and what can be the suggested reading. Though normally in my classroom I make this very clear before the student that at first go you should be studying only class notes and previous year's question paper. If you are able to attempt all the previous year's question paper, all the previous year's question from a topic, and if you have gone through the class notes at least twice or thrice, and then only you should be going through a book, any particular textbook, you should be attempting only when you have attended the class lecture, because those books have not written for the purpose of civil services exam. Those books are written for academic purpose. That is why there is absolutely no point in going through the books and then remaining confused, क्योंकि वो बुक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा गया है और वो एग्जाम के रिक्वायरमेंट को केटर भी नहीं करता है. उस बुक का सिंपली इतना पर्पस होता है कि वो बुक एक एकेडमिक पर्पस से लिखा गया है, वो आपको एक आइडिया देता है सिलेबस के कुछ टॉपिक्स को लेकर. तो हमारे एग्जाम का नेचर इज डिफरेंट. हमारा एग्जाम इज अ वेरी प्रोफेशनल एग्जाम and you need to remain very professional in your approach. तो मैं स्टूडेंट से हमेशा ये कहता हूँ that if you want to go through some books, so first you go through class notes at least a couple of times, and that will give you fair amount of idea about the subject. Once you will have fair amount of idea about the subject, then certainly you can go through any book and you will get to know what is important from examination point of view and what is not so important from the examination point of view. But initially I would not recommend you to go through books. First you need to study, you need to read class notes and then only go through books. Otherwise it will become very lengthy affair for you. So let us begin with the syllabus of political science first. कि political science का syllabus के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, and then we will discuss about the political science, various components of political science and how political science syllabus it can be integrated with current affairs and what needs to be done, do's and don'ts related to political science later on we will discuss. So first part will be decoding the syllabus, and then we will discuss about its convergence with general studies, and then I will be discussing with you about its integration with current affairs, and then at the end we will discuss about do's and don'ts related to the optional. So first part, political science syllabus, it consists of 2 papers and 4 parts. Remember, there are 2 papers and 4 parts. So paper 1, it consists of 2 parts
and paper 2, it also consists of two parts, section A and section B. So paper 2, again it consists of two parts, section A and section B. And paper 1, it consists of two parts, section A and section B. Section A and section B. Now, section A and section B. सेक्शन ए में क्या है और सेक्शन बी में क्या है पेपर 1 के, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2 पार्ट. सो फर्स्ट पेपर 1. पेपर 1, it consists of two part. Section A. Section A, it consists of political theory part. Section A, it consists of political theory. And so you have theories of state, you have Indian political thought, you have Western political thought, and you have ideologies section, various ideologies we will be studying, and we will be studying a lot of theories like theories on liberty, theories on equality, and theories on justice. So liberty, equality, justice सबके theories के बारे में हम लोग discuss करेंगे, and we will also be discussing about the theories of state. So section A of paper 1, it mainly consists of theory portion, which primarily consists of theories. So theories of state, theories of liberty, theories of equality, justice, all these theories will be covered. And then ideologies section will further be covered, and Indian political thought and Western political thought it covers. Now this entire portion, almost 90% part of this portion is static, almost 90%, for which I advise a student that initially you rely upon the class notes and later on you graduate to any one textbook. Later on, that will be the later part, but first you need to go through the class notes. पहले class notes पढ़ना इसलिए ज़रूरी है for the purpose of base formation. It will form your base, it will improve your base, it will give you conceptual clarity, and then reading books will not be a taxing exercise for you, will not be a very challenging exercise for you. In fact, then you will be enjoying reading books a lot. So first part will be 90% portion is static, and 10% portion these days they have started dynamic question also related to political theory syllabus. So what they are trying to do, they are trying to integrate theory with current happenings. So for example, अगर उन्होंने गांधी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, सो गांधी को वो करंट हैपनिंग से, कंटेम्प्रेरी चीज़ों से कनेक्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ethnic violence in many parts of India and also in many parts of the world, वहाँ से वो गांधी को कनेक्ट करेंगे. अगर उन्होंने मान लिया एरिस्टोटल के बारे में पूछा है, या मान लिया उन्होंने प्लेटो के बारे में पूछा है, तो प्लेटो के आइडिया को वो गुड गवर्नेंस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. एरिस्टोटल के नोशन ऑफ जस्टिस को कंटेम्प्रेरी टाइम से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. तो इसीलिए इस पार्ट में मैंने आपसे कहा दैट 90% स्टैटिक एंड 10% डायनेमिक थिंग्स यू नीड टू स्टडी. As regards to the convergence of this part with general studies is concerned, that is the first part, that these are the various components of this syllabus, and then you have 90% static areas and 10% dynamic areas. And as regards to its convergence with general studies, so its convergence with general studies can be seen largely convergence with GS. Convergence with GS, it can be seen largely with ethics paper 4 of general studies. So theoretical portion of ethics, it is large part of theoretical portion of ethics paper 4 of general studies is covered under this section, Indian political thought, Western political thought, and also theories like theories on justice, theories on liberty, and theories on equality. So this theories part, it covers, and Indian political thought as well as Western political thought, it covers
almost 50-60% theories part of ethics paper. I'm not saying that case studies part of ethics paper will be covered here. That's entirely a different topic. But as regards to theories part, as regards to theory part portion of paper 4, almost 60% of the theory will be covered here in the political science. Obviously not related to psychology and other things, but as far as those political thinkers and those philosophers are concerned, those philosophers will be covered in the political science syllabus. And moreover, about theories on justice, liberty and equality, that has also been asked in paper 4. It also will be covered in political science paper 1 section A. दिस एरिया इज 90% स्टैटिक, मतलब यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस नहीं हैं, बट 10% डायनेमिक. केवल स्टैटिक लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको डायनेमिक एरियाज पर यू नीड टू फोकस ऑन डायनेमिक एरियाज ऑल्सो. यू नीड टू राइट कंटेम्प्रेरी एंड रेलिवेंट एग्जाम्पल्स ऑल्सो. दूसरा कैसा है, अगर आप इफ यू विल गो थ्रू पॉलिटिकल साइंस पेपर, सो यू विल रियलाइज अ कपल ऑफ थिंग्स, that it does not require the knowledge of higher studies. It requires very generic understanding of the subject. That is why if you will look at the profile of toppers coming from political science, you will realize two things. That one, either they are from technical background, और दूसरा उन्होंने PhD नहीं किया है पॉलिटिकल साइंस में, उन्होंने सिंपल BA किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, या उसमें से कुछ लोगों ने MA किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल दीज डेज. तो सिविल सर्विसेज एग्जाम का ऐसा पैटर्न है कि उन्होंने नंबर ऑफ इयर्स जो तुमने किसी एग्जाम के लिए तैयारी की है, वो एडवांटेज उन्होंने खत्म कर दिया है जिस तरीके के पेपर को उन्होंने पूछना शुरू किया है. सो दैट रिमेन्स द फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट, सेक्शन बी ऑफ पेपर 1. दिस सेक्शन बी ऑफ पेपर 1, it covers Indian government and politics, and it covers a lot of portion of general studies. And what are those portions that will be covered under Indian government and politics section? So first topic that will be covered here is a portion of modern Indian history. You study about modern Indian history also. You study about post-independence history also, post-independence also, post-independence history. वो भी तुम यहाँ पर पढ़ते हो पॉलिटिकल साइंस में. प्लस इंडियन पॉलिटी के भी तुम बहुत सारे पोर्शन यहाँ पर, ऑलमोस्ट तुम इंडियन पॉलिटी के पोर्शन फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू तुम यहाँ पर कवर कर लेते हो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में ही. इंडियन पॉलिटी एंड ऑल्सो अ नंबर ऑफ टॉपिक्स of social issues is also covered here. जैसे women movement, environmental movement, civil rights movement, subaltern movement, all those movements will be covered here. Human rights movement, all those movements will be covered here in your political science syllabus. And almost entire syllabus of Indian polity will be covered here. A bit of modern Indian history and a bit of post-independence history will also be covered here. In fact, बहुत सारे टॉपर्स को आप देखेंगे तो वो पॉलिटिकल साइंस की एक बुक आती है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो क्लास 11th और 12th की बुक में आपको दिख जाएगा. उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क भी दिखेगा, पॉलिटिकल थियरीज भी दिखेंगी और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड भी दिखेगा. बहुत सारे बच्चे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बुक को जनरल स्टडीज़ के पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं, जबकि वो पॉलिटिकल साइंस की NCERT है. सो पोस्ट इंडिपेंडेंस विल ऑल्सो बी कवर्ड हियर. Modern history will also be covered here, and not only modern Indian history, but a portion of Indian polity will, in fact, almost entire Indian polity will be covered here, at least from mains point of view, and also largely prelims things will also be covered here, but mains will certainly be covered here. There is absolutely no denying this fact, and social issues portion will also be covered here. So this particular portion of Indian government and politics, it has topics like perspectives on Indian national movement, then constitutionalism to mass satyagraha, and they have asked questions, certain questions related to exclusively from modern Indian history. And then we will be discussing about various movements which I told you. Nehruvian model of economy, Gandhian model of economy, everything will be covered here. Even governance portion will be covered here. That all those constitutional bodies and non-constitutional bodies that will be covered here in the syllabus of political science. Therein lies the beauty of this particular subject. So entire Indian government and politics
अगर तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो या ना हो, एनीवे यू विल बी स्टडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तुम तो भी पढ़ोगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को, वेदर पॉलिटिकल साइंस इज योर ऑप्शनल और नॉट। तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस और ऑप्शनल हो या ना हो तो भी तुम इन पोर्शंस को पढ़ोगे। आइडियोलॉजीज, ये जनरल स्टडीज के पेपर 1 के साथ कवर करता है, जहां पेपर 1 में वो सारी आइडियोलॉजीज दी हुई हैं जनरल स्टडीज के जो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के आइडियोलॉजी सेक्शन में दिया हुआ है। सो पॉलिटिकल साइंस सिलेबस, इट गिव्स यू अ हेड स्टार्ट also in the preparation of general studies. Now let us begin with paper 2 and this particular portion as regards to static and dynamic areas. Static मतलब जो जिसमें कोई चेंज नहीं है, डायनेमिक मतलब जिसको करंट अफेयर्स से इंटीग्रेट किया गया है। तो जहां तक स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन की बात है सेक्शन बी में, तो यहां स्टैटिक और डायनेमिक मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 65 to 70% इज स्टैटिक and almost 30 to 35% is a dynamic, or rather 30 to 25% is a dynamic. 25 से लेकर 35% तक डायनेमिक है। And then comes paper 2. Now paper 2, it again consists of two paper, section A and section B. Section A of paper 2, section A and section B. Section B. Now section B is completely relevant for general studies because section B, it consists of India's foreign policy, जो anyway आपको जनरल स्टडीज के प्रिपरेशन में पढ़ना है। यहां पर थोड़ा ज्यादा डीप में आपको पढ़ना है। जनरल स्टडीज के सिलेबस में आपको डीप में नहीं पढ़ना है, आपको सिंपली उसको पढ़ना है, बहुत डिटेल में उसको नहीं पढ़ना है। यहाँ थोड़े ज़्यादा डिटेल में, थोड़े ज़्यादा डीप में आप चीज़ों को पढ़ते हैं। जनरल स्टडीज़ में आपके पास बेसिक लेवल का नॉलेज होता है, वहाँ से आपका काम चल जाता है। एंड सेक्शन ए, इट कंसिस्ट ऑफ a couple of different topics which are not there in general studies, like one, comparative politics is covered here. One, इसका जनरल स्टडीज से कोई लेना देना नहीं है, comparative politics का। comparative politics, it consists of theories portion जैसे realism, liberalism, and then it consists of Cold War and other topics, Cold War, non-alignment. These topics are relevant from world history point of view. वहां पर जनरल स्टडीज का कन्वर्जेंस है। जो तुम पढ़ते हो अबाउट कोल्ड वॉर, जो तुम पढ़ते हो अबाउट यूएस हेजेमनी, या तुम यहां पर पढ़ते हो नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में, ऑल दीज टॉपिक्स यू नीड टू स्टडी इन जनरल स्टडीज एज वेल। एंड देन नेक्स्ट टू टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 सेक्शन ए इज very relevant for general studies paper. That is, one topic is WTO, globalization, WTO, globalization, IMF, World Bank, UN and its agencies, UN and its agencies, and finally एक टॉपिक है जो बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स। ये पूरा का पूरा टॉपिक तुम्हारे जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स, ग्लोबल कंसर्न्स। तो जनरल स्टडीज में इसमें से दो ब्रॉड टॉपिक तुम नहीं पढ़ते हो, दैट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड थियरीज, एंड ऑल्सो कंसेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तुम पढ़ते हो जनरल स्टडीज में, बिट ऑफ दैट। लेकिन ये पूरा टॉपिक तुम पढ़ते हो जनरल स्टडीज के लिए, और ये पूरा टॉपिक तुम पढ़ते हो जनरल स्टडीज के लिए। जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स है लाइक क्लाइमेट चेंज और टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, वो सारी चीज़ें आप जनरल स्टडीज के लिए पढ़ते हैं। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, वो सारी चीज़ें आपको एनीवे अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल नहीं है, देन ऑल्सो यू नीड टू स्टडी अबाउट दीज सब्जेक्ट्स। दैट इज वाई political science syllabus is very relevant for general studies also. So if you will take political science optional, that will give you a lot of space in dealing with general studies. आपको general studies में बहुत सारा समय आपका बच जाएगा, because those topics you have already covered under your optional subject. तो आप उन सब्जेक्ट पर समय लगा सकते हैं जनरल स्टडीज के, कि जो आपके एग्जाम, जो आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ पर थोड़े वीक हैं। और इतना ही नहीं, इन प्रीलिम्स पेपर ऑलमोस्ट
1/4 of the paper or 30% of the paper is covered through political science and international relations syllabus. How? Almost 14 to 15 questions every year is being asked from Indian polity, and almost 14 to 15 questions every year is being asked from international institutions. ये 30 क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऐसे हैं जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जिसका है उस बच्चे के लिए इन क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। मतलब तुम सोचो कि प्रीलिम्स का ऑलमोस्ट 30% सिलेबस तुमको तुम्हारे ऑप्शनल के साथ कन्वर्जेंस मिल रहा है, और जनरल स्टडीज का ऑलमोस्ट 500 मार्क्स का पेपर तुमको पॉलिटिकल साइंस के साथ कन्वर्जेंस मिल रहा है, और उसके अलावा एसए के पेपर का कन्वर्जेंस मैं ऐसा नहीं कहूँगा केवल पीएसआईआर के साथ है, बाकी के ऑप्शनल के का भी एसए के साथ कन्वर्जेंस है, तो वो तो बहुत ही जेनरिक होता है। लेकिन तुमको साफ साफ हेड स्टार्ट है इन प्रीलिम्स एंड ऑल्सो इन मेंस। इन प्रीलिम्स ऑलमोस्ट 30% ऑफ द पेपर यू कैन इजिली कवर अगर तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल है तो, क्योंकि तुम सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में यू ऑटोमेटिकली नो अबाउट दोज इंस्टीट्यूशंस इन योर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर सिलेबस एनीवे, even if political science is not your optional, you will be studying. यहां पर मैं कहता हूं स्टैटिक और डायनेमिक का क्या मिक्सचर होगा, तो यहां पर स्टैटिक और डायनेमिक का मिक्सचर 70-30 का होगा। स्टैटिक 70% और डायनेमिक 30%। डायनेमिक विल बी 30%। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में you need to study about the themes. Those themes are integrated with current happenings. तो केवल करंट अफेयर्स के बेसिस पर तुमको कोई फायदा नहीं होना है, तुम्हें उन थीम्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन वन ऑफ द इयर्स इन 2019 they have asked this question about transformation of India's actist policy, India's lookist policy into actist policy. Now this transformation requires you to know about the historical background as well as करंट हैपनिंग्स। तो यहां जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थीम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वंस योर थीम्स आर क्लियर, सो इट इज वेरी इजी फॉर यू इंटीग्रेट योर थीम विद करंट अफेयर्स। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू अमेरिका, तो वहां क्या हुआ है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इफ एनीथिंग न्यू has happened during Prime Minister Modi's visit to United States of America, and that will be part of current affairs that can be integrated into your themes. तो इसीलिए यहाँ पर मैं सीधे आपसे नहीं बोलूँगा स्टैटिक डायनेमिक, क्योंकि यहाँ स्टैटिक एरियाज को वो डायनेमिक के साथ मिक्स करते हैं, करंट अफेयर्स के साथ मिक्स करके क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल? अब यहाँ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के बारे में कुछ मिथ्स हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से रिलेटेड सबसे बड़ा मिथ क्या है? पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से रिलेटेड सबसे बड़ा मिथ है दैट दिस ऑप्शनल इज अ लेंदी ऑप्शनल। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दैट इज ट्रू, बट देन दैट्स अ मिथ दैट इट हैज गॉट अ लेंदी सिलेबस। मैं इस बात से अग्री क्यों नहीं करता हूं? मैं इस बात से अग्री इसलिए नहीं करता हूं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल साइंसेस सिलेबस कन्वर्जेंस विद जनरल स्टडीज। There is a lot of convergence with general studies, जहां पर in both prelims as well as mains stage you will find there is a lot of convergence, और वो तुम्हारे बहुत सारे important टाइम को बचा देता है। जैसे मैंने तुमसे कहा in prelims paper almost 30% of the questions they ask directly from political science, 30%, and mains के पेपर में almost 45 to 50% syllabus has got its convergence with general studies. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई तुम्हारा काम इतना आसान कर रहा है कोई ऑप्शनल जनरल स्टडीज में, सो दैट ऑप्शनल मस्ट बी लुक्ड इनटू। दैट ऑप्शनल इट डिजर्व्स टू रिमेन लेंदी, इट डिजर्व्स टू रिमेन इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शनल अ बिट लेंदी, बिट मोर। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये तुम्हारे जनरल स्टडीज के समय को कम तो कर रहा है। अभी इस बार के पेपर में, जिसको लोग लिविंग मेमोरी में सबसे टफ पेपर बता रहे हैं जनरल स्टडीज का, दे आस्क्ड ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंडियन पॉलिटी। अगर इंडियन पॉलिटी से तुम 14 क्वेश्चन में से केवल 6-7 क्वेश्चन कर पाते हो, मान लेते हैं, बाकी के 7 क्वेश्चन तुम नहीं कर पाए,
दे आस्क्ड ऑलमोस्ट 15 to 16 क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस। उस 15 से 16 में से बहुत मजे से कोई भी बच्चा 10 से 11 क्वेश्चन का आंसर दे सकता था, आराम से 10 से 11 क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता था इस पेपर में, जहां पर मेरिट बनी है अराउंड 45 क्वेश्चन, अराउंड 43 और 42 क्वेश्चन। वहां पर तुमको ऑलमोस्ट 18 to 20 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस वाले को बड़ी आसानी से वो कवर कर रहा है, मतलब 1/3 सिलेबस कवर करके, और तुम जनरल स्टडीज के कट ऑफ का आधा मार्क्स कवर कर रहे हो। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस ऑप्शनल के अपने बेनिफिट है। मेंस के एग्जाम में इट इज कवरिंग ऑलमोस्ट 45 to 50% ऑफ योर सिलेबस, सो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट ऑप्शनल। वैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसा नहीं कि केवल पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल ग्रेट है, एवरी ऑप्शनल इज अ ग्रेट ऑप्शनल। पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल का देयर इज कन्वर्जेंस विद अदर पेपर्स ऑफ जनरल स्टडीज, दैट इज ट्रू। यहां पर एक दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कि पॉलिटिकल साइंस में हमारी सजेस्टेड रीडिंग क्या होती है। देखो, मैंने आपसे कहा कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में आपकी पहली सजेस्टेड रीडिंग होती है दैट यू नीड टू गो थ्रू फर्स्ट क्लास नोट्स 3-4 टाइम्स। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं दैट यू रीड क्लास नोट्स 3-4 टाइम्स, बार बार क्लास नोट्स को पढ़ो। उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करो, PYQs करो, और तुम ऑलमोस्ट क्लास नोट से 90% PYQs कर लेते हो। अगर तुम्हें अब वैल्यू एडिशन चाहिए, देन यू कैन गो थ्रू टेक्स्ट बुक्स, देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन। देन यू कैन गो थ्रू बुक्स, और बुक्स में भी एक टॉपिक पर एक बुक पढ़ना है। प्रॉब्लम यह है कि एक टॉपिक का मतलब एक सेक्शन पर एक बुक पढ़ना है। प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल साइंस के लिए जो बुक्स लिखी गई हैं, वो बुक्स एकेडमिक पर्पज से बुक्स लिखी गई हैं, वो तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से तो लिखी नहीं गई है। सो ऑब्वियसली अगर कोई बुक तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से नहीं लिखी गई है, तो तुम्हारे काम का उसमें केवल 3-4 ही टॉपिक्स होंगे, ऐसा नहीं पूरा का पूरा बुक तुम्हारे काम का होगा। इसलिए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में बहुत ही सिंपल अप्रोच रखना है। इट्स अ ग्रेट ऑप्शनल एंड इट रिक्वायर्स जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग। कुछ लोगों के दिमाग में एक और मिथ होता है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कि इसमें एकेडमिक बैकग्राउंड इज नीडेड। अगर मैंने इस सब्जेक्ट में पढ़ाई की हो तो ही मैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कर सकता हूं, अगर मैं किसी दूसरे बैकग्राउंड से हूं तो मैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस नहीं कर पाऊंगा। इट्स totally a myth. Why it's a myth? It's a myth because if you look at the success rate of political science, then you will realize one thing, that seldom you will find people coming from only political science background. And those who are having political science background, they have not done their higher studies. या तो आपको प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बच्चे दिखते हैं, नहीं तो आपको केवल BA और MA वाले बच्चे दिखते हैं, आपको PhD वाले बच्चे नहीं दिखते हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में। पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में आपको या तो वो बच्चा दिखेगा जिसने केवल ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस में, या तो आपको वो बच्चा दिखेगा पॉलिटिकल साइंस में जिस बच्चे ने जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है या जो मेडिकल साइंसेस बैकग्राउंड का है, दे आर डूइंग रियली वेल इन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। सो इट्स नॉट that academic background is needed. Academic background civil services के इनफैक्ट किसी भी ऑप्शनल में is not needed. हाँ, I may agree that for physics, chemistry, mathematics, mechanical engineering, electrical engineering, you need to have academic background, but not for political science or really any liberal arts optional. For liberal arts optional, you do not need to have बैकग्राउंड इन दैट सब्जेक्ट। अगर आप अभी रिसेंटली UPSC ने एक डेटा दिया है जो RTI से डेटा आया है, आज के डेट में अंडर ग्रेजुएट स्टडीज वाले लोग ऑलमोस्ट 79% है। यू विल बी सरप्राइज, सॉरी 82%। सो 82% सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर हैविंग ओनली बैचलर्स डिग्री। दैट्स अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट फॉर मी। 2009 के बाद ये पूरा चेंज हो चुका है। 2009 से पहले पीपल विद हायर स्टडीज यूज्ड टू क्लियर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बट सिंस 2013 द ट्रेंड हैज गॉट कंप्लीटली रिवर्स्ड एंड टुडे people having undergraduate degrees, they are clearing civil services examination like anything. You will be surprised to know. So 82% of the successful candidates
of in civil services examination, they are having only bachelor's degree. समझ रहे हो मेरी बात? और रेस्ट 18% में आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि उनके पास केवल मास्टर्स डिग्री होता होगा, उससे ऊपर की डिग्री उनके पास नहीं होती है. तो चीजें बहुत बदल चुकी हैं. जो एग्जाम का पैटर्न है वो बहुत बदल चुका है. आज के डेट में जो एग्जाम का पैटर्न है दैट डिमांड्स वेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑन योर पार्ट. यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट इन टैकलिंग दिस चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम. ये जो चेंजिंग ट्रेंड ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम है दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर पार्ट. जैसे व्हाट आर दोज थिंग्स? सो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज सिविल सर्विसेज एग्जाम में ये है दैट यू नीड टू वेरी स्मार्ट, you need to have complete command over previous year's question paper, and you need to know about the syllabus well. अगर आपको syllabus के बारे में पता है, PYQs के बारे में पता है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. अगर आपको syllabus के बारे में नहीं पता है, आपको PYQs के बारे में नहीं पता है, ऑटोमेटिकली आपके लिए चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी, चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी. सो यू नीड टू फोकस अपॉन दीज बेसिक आइडियाज, these basic things for civil services exam. There lies the success of a candidate. So it's no more an academic exam. It's an exam which anybody can clear from having any background from any part of India. और इसीलिए PW आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी इंडिया के पार्ट से हो. We have got tremendous technical infrastructure, great technical infrastructure. कि आप बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन हमारा होता है जहां मैं स्टूडेंट को उनके नाम से एड्रेस करता हूं. एंड ये इस तरह के टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो जो बैरियर था दिल्ली आने वाला, वो बैरियर हैज ऑलरेडी बीन डिमोलिश्ड. सो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, इट्स अ वंडरफुल ऑप्शनल. आई कैन अश्योर यू that political science optional will not let you down. In fact, it will help you a lot in your preparation of general studies as well. As regards to books, political science में कुछ academic discipline के लिए books लिखी गई हैं, चाहे वो political theory की book हो या Indian government and politics पर हो या IR की theory पे हो या comparative politics पर हो. तो initial level पर मैं बच्चों से कहता हूँ you do not go through books. First, during base building process, you read few things, but you revise it multiple times. एक बार ये आपका बेस बन जाता है. Once you have gone through previous year's question paper and you are able to tackle it successfully, उसके बाद अगर आप किसी बुक को पढ़ते भी हैं तो वो बुक आपको हेल्प करेगा. वैसे फॉर बिगनर्स आई एडवाइज दैट यू कैन गो थ्रू NCERT बुक्स. आप NCERT बुक्स के थ्रू जाएंगे, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू लॉट. सो दैट्स अबाउट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल. And we will be coming out with such sessions every now and then. हम ऐसे सेशन के साथ रेगुलर बेसिस पर आपके लिए आते रहेंगे. That will help you in your preparation. So that's all about the overview of the syllabus of political science, and that's all about how political science syllabus can help you in your civil services preparation. And if you are under any dilemma which optional to take for civil services, so I hope that this has solved a lot of your queries. So that's all about the overview of the syllabus of political science. Thank you.